हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। दिस वीडियो जो मैं करने जा रहा हूँ, दिस इज अ रेगुलर वीडियो जो मैं करता हूँ रिगार्डिंग द फॉरेक्स एंड कमोडिटी मार्केट टू हेल्प माय लर्नर्स, टू हेल्प पीपल ग्रो इन दिस एरिया और सेगमेंट में। मैं जो ट्रेड के बारे में सोच रहा हूँ, मैं जिस टाइप ऑफ का ट्रेड ले रहा हूँ, एंड दिस आई डिस्क्लोज सो दैट दिस हेल्प्स यू आउट। So let me show you what I thinking on the forex and commodity market. ये वीडियो will be in English, a mix of Hindi and English to reach the greater audience. मेरे बारे में I'm Shanando Das. I'm a forex and commodity trader along with stocks. I specialize in global macro and multi-asset investing and trading. उसमें greater specialization है forex and commodity पे. I'm associated currently with Elan Markets. Elan Markets, if you type my name just SAA, you'll find it, Shanando Das. And I have two courses broadly. This one covers the fundamentals and positions, different fundamental aspect of Forex and commodity. And this gives access to my trading setup. So this is let's go back to our जो रूटीन मेरे बारे में आप जान गए हैं। आप मुझे ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब में तो आई होप आप मुझे जरूर फॉलो कर रहे हैं। तो पहला जॉब हम लोग का रहेगा कि लुक एट द न्यूज। क्या है इंपॉर्टेंट जो न्यूज और इवेंट था कल, दैट इज द फेडरल एफओएमसी, फेडरल ओपन मार्केट कमिटी, इनका मीटिंग का जो मिनट्स था वो रिलीज था। इट इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज द फेड मीटिंग, बट उससे हम लोग का एक आइडिया चलता है कि ओवरऑल व्हाट आर देयर थिंकिंग। और वो ये जो डॉक्यूमेंट है इसके जरिए भी वो उनका थॉट कम्युनिकेट करना चाहते हैं मार्केट से। So market pays some attention to this meeting, minutes of meeting. ये देखिए हांगकांग स्टॉक्स आर ट्राइंग टू राइज। हम लोग ऑलरेडी, अगर आप मेरे ग्लोबल के पोर्टफोलियो के वीडियोस देख रहे हैं उसमें आप लोगों को दिखेगा वी आर ऑलरेडी लॉन्ग ऑन छोटा पोजीशन, नथिंग बिग, long on emerging markets, MSCI, China, obviously Hong Kong, this kind of recoveries we are looking at. This is we'll look at gold climbs, how the climbing is going. Obviously हम लोग देखे थे कि रिकवरी चल रहा है थोड़ा गोल्ड में। चाइना स्टॉक स्ट्रगल फॉर डायरेक्शन, राइज के बाद इट्स स्टिल नॉट क्लियर कि अब आगे बढ़ेगा। इज इट फंडामेंटल ड्रिवन? नेक्स्ट मूव इन चाइनीज स्टॉक्स विल बी इंपॉर्टेंट। Stocks at Japan. Japan is significantly going up. This is almost close to, I will have to check. JPN 225 is not Nikkei. Nikkei made its high in 1992. So is it going to break? So there are several long-term trend is under threat. तो निकेई का बारे में हम लोग बात किए थे क्लास में, जो भी मेरे क्लास रिगोरसली किए हैं आप जानते हैं। वी टॉक्ट अबाउट इट कि एवरीवेयर वो छा जाएगा कि निकेई का ऑल टाइम हाई ब्रेक का न्यूज, एंड दैट विल फ्यूएल टू द, ये जो बुलिश का मूवमेंट हो रहा है ये इसमें और फ्यूएल और आग डालेगा ये निकेई का मूवमेंट। और उसके बाद जब रेट कट आएगा उसमें और भी आग डाला जाएगा, मतलब इट विल फ्यूएल द रैली। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत बार बोल चुका हूं, वी आर इन द रिसेशनरी साइकिल एट द एंड पार्ट ऑफ द साइकिल। So stocks will still go up. I think it can go up and very likely will go up. The mood is still strong globally, but we have to be aware that we are at the end part of the cycle. So in our next investment decision or trading decision, हम लोग वो properly execute कर पाए। तो किस टाइप ऑफ एसेट्स मैं देख रहा हूँ, यू कैन हैव अ लुक एट द मेरा ग्लोबल पोर्टफोलियो का जो वीडियो है उसको। अब इसके बाद हम लोग चले जाएंगे कैलेंडर में। ये एक रेगुलर हैबिट वाला काम है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट यस्टरडे व्हाट्स इंपॉर्टेंट। 20-year bond auction actual was on the higher side. This was expected कि interest rate का high होगा. This is market based yield almost 17 basis points higher from the previous auction. उसके साथ आया FOMC minutes. उन्होंने hint दिया कि unless further going down in
inflation, very likely core inflation, Fed is not comfortable to cut rates. That means inflation data अब हो गया बहुत important. Inflation data क्या आ रहा है, उस basis पे market can show volatility. आज है आपका जो रेगुलर डेटा आ रहा है एक फ्लैश पीएमआई. द मेन पीएमआई आता है एट द एंड ऑफ द मंथ. फ्लैश पीएमआई में यू विल सी यूरोपियन मार्केट्स में movement more than influencing US market. Euro currency, pound currency, they can go up if the PMI reports come stronger than expected in Europe. That will be positive. इंडिया का भी फ्लैश पीएमआई आया है. इन दिस ग्लोबल वीकनेस, ग्लोबल रिसेशनरी साइकिल वीकनेस, India has so far been a remarkable growth story. So this is a definite, maybe the next जो rise होगा, India will be on the path of becoming the next superstar. यहाँ पे द इम्पोर्टेंट जो डेटा है आज का फॉर यूरो करेंसी के लिए इज द इन्फ्लेशन रेट. इफ इन्फ्लेशन रेट ड्रॉप सिग्निफिकेंटली we will do weakness in euro. If the inflation rate is strong or rising, especially the core inflation, then it is positive for the euro currency. Regular data on initial jobless claims एंड फाइनल कमोडिटी के लिए इंपॉर्टेंट डेटा आ रहा है 9 बजे नेचुरल गैस इन्वेंटरी एंड 9:30 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंटरी. उसके साथ साथ वी विल हैव द रेट एंड टिप्स सेवरल अदर ऑप्शंस, बट दे आर नॉट मेजर मार्केट मूवर. सो मेजर मार्केट मूवर है नहीं. वी विल, these are important for individual commodities, crude oil and NG inventory. And PMI will, this data is important for overall euro, and PMIs are will likely to trigger some volatility in the currency market ये यूरोपियन सेशन में. तो ये रहे डेटा. लेट्स गो बैक नाउ टू द चार्ट. उसमें पहले हम लोग जाएंगे डॉलर में. येस्टरडे ऑलरेडी मैं डॉलर का, और इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे करेंसी वाला सेटअप. जो स्ट्रेटेजी और सेटअप मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, दिस इज द फाउंटेन ऑफ गोल्ड और कागेनु इजुमी. दिस इज जापानीज strategy sort of. So here you can see the dollar. I said that I'm not bullish. Naturally, क्यों आप लोगों को दिख रहा है price action is bearish, red candle, but I'm not ready to sell either. Means ये candle पे अगर मैं बाहर होता, if I were outside India, I would have not sold dollar index. Rather, I would look individual currency opportunities, कैसे ये डॉलर को वीकनेस को कैपिटलाइज किया जाए, और वही मैं इंडिया में रेप्लिकेट किया हूं, which I would have done in globally as well. So dollar is correction means there were opportunities, pockets of small opportunities in euro USD. कल हम लोग बात किए कि I am long on euro USD. The candle is now breaking higher. That's what I was looking for. ये empty line का एक बार break हो जाए. So today I'll be looking to add quantity. कैसे quantity मैं add करूंगा? I think I am using a wrong version. Let me use the latest version. ऑलवेज यूज द लेटेस्ट वर्जन. यहाँ पे जाके मूव करके एक नया फिर से लगा लीजिएगा, सो इट विल बी ऑटो अपडेटेड. सो डेली चार्ट में जब हम लोग देख लिए कि वी आर रेडी टू एंटर इन अ चार्ट, दिस इज द चार्ट डेली. सो 125 मिनट्स में कोई ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे ये लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है. सपोज दिस लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है 1.0830. सिंस स्पाइक्स है, हम लोग थोड़ा रेस्पेक्ट देंगे. तो आप यहाँ पे जाकर ऑल टेक क्लिक करने से ही आ जाएगा अलर्ट सेंटर क्रॉसिंग अप क्रिएट. अलर्ट बन गया 125 मिनट्स चार्ट पे एक क्रॉसिंग लेवल. सो उस लेवल के क्रॉस के बाद आई विल प्रेफर टू एंटर मोर क्वांटिटी. दिस इज गोइंग गुड एंड सो फार पहले जो एंट्री था दैट ट्रेड इज ऑलरेडी इन प्रॉफिट. So feeling pretty well. In the possibility have further rise का.
Now, is regarding मैं before I move further into currency, मैं bond market में एक बार जाऊंगा कि bond market is very important समझने के लिए क्या चल रहा है. So overall जो मुझे दिख रहा है, let's go to the short term interest rate 2-year. Short term interest rate, it's a daily basis, it's a bullish candle, मतलब थोड़ा positive. But RSI or the momentum is pretty flat. RSI X is completely flat. So significantly bullish नहीं, थोड़ा long term rates. फेडरल FOMC का जो मिनट्स था उन्होंने जैसे हिंट दिया कि दे आर नॉट रेडी टू कट रेट्स अनलेस इन्फ्लेशन स्पेशली कोर ड्रॉप्स. That is positive for the interest rate. तो इसलिए वो मूव हुआ. We are seeing green candles, but overall उतना तगड़ा मोमेंटम है नहीं. मार्केट में अभी भी दोला मतलब confusion is not convinced. Market is not convinced about जो फेड कम्युनिकेट कर रहा है. तो ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट का राइज दिख रहा है दैट इज डॉलर पॉजिटिव. हम इसको एक स्टेप और आगे लेके जा सकते हैं नेक्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में. So let me bring the spread, US German spread. US German spread is currently having overall a positive green candle. This means German interest rate is more positive than US interest rate. Basically, German interest rate minus US interest rate. So this is not bearish. That's what I mean. This is not bearish. So this is not significantly dollar positive. It's more of a neutral. So interest rate ka short term, this green candle may not boost the dollar. So here let's look at the other spreads, second order derivatives जो हम लोग देख रहे हैं. UK US gilt और treasury का spread को हम लोग देख रहे हैं. So gilt treasury spread is more of a coming down. This is more of a dollar positive and overall pound negative. But this is just one of the fundamentals. दूसरा और भी factors रहते हैं जो currency market को influence करते हैं. But having a look at the interest rate is helpful. अब फिर से वापस जाएंगे करेंसी मार्केट में. सो यूरो यूएसडी वी हैव लुक्ड और उसके साथ साथ यूरो आईएनआर. यूरो आईएनआर में भी मैं अब बुलिश हूं. एक बाई सिग्नल आया है फोमो क्वांटिटी के साथ. आई एम पॉजिटिव. आई एम वेटिंग फॉर फर्दर ब्रेक. बट यूरो यूएसडी मैं पहले बाई कर लिया था rather than euro INR. euro USD बाई करना मतलब euro INR बाई करना and USD INR को short करना with the right hedged quantity. So overall euro INR में भी I'm bullish. This is I'll do small quantity because the preferred trades is sell breakdown and sell resistance. This is a contra trade I will like to do with much smaller quantity. इसके नेक्स्ट हम लोग जाएंगे इन द जीबीपी यूएसडी में. जीबीपी यूएसडी लास्ट टाइम जब हम लोग वी डिस्कस्ड आई सेड आई एम नॉट रेडी. आई एम नॉट कन्विंसिंगली रेडी टू गो लॉन्ग ऑन जीबीपी. इट हैज बीन seesawing. I have tried to entering here, made a loss, try break out this one, did not work out much. Then I entered here with a small profit. I could exit. No significant move इसका मतलब मिल रहा है. I love riding bigger rides. So यहाँ पे ये जो level है flat level 1.2665. This is significantly strong. मैं इसका तो ब्रेक चाहूंगा ही लॉन्ग करने के लिए. क्रॉसिंग अप इसमें मैं अलर्ट लगा देता हूं. प्लस इसका ब्रेक चाहूंगा. ये जो स्ट्रॉन्ग एक कंजेशन जोन बना है तो ये रेजिस्टेंस के लिए मैं 1.2714 या मेनली 1.272 उसका ब्रेक चाहूंगा टू डू मोर. दीज आर द लेवल्स जहां पे मैं सोचूंगा कि मुझे ज्यादा क्वांटिटी शायद अब करना चाहिए. बट अभी के लिए मैं इंडिविजुअल क्वांटिटी का भी नहीं सोच रहा हूं. नॉट इवन फोमो क्वांटिटी. मैं इसमें जो प्रेफर करूंगा दैट इज द शॉर्ट ट्रेंड बुलिश हो जाए उसका अलर्ट मैं लगा देता हूं विच इज background green, short trend bullish.
तो वो जब अलर्ट आएगा देन ओनली आई थिंक अबाउट व्हाट टू डू इन द जीबीपी यूएसडी। ओवरऑल इंटरेस्ट रेट स्कोप जीबीपी के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं, एक्चुअली इट्स बिट ऑफ अ नेगेटिव फॉर द जीबीपी। फिर हम लोग आते हैं जीबीपी आईएनआर में। जीबीपी आईएनआर में भी मेरा ख्याल सिमिलर है। चार्ट के लिए थोड़ा वेट करते हैं। I don't know what I did wrong. Let me apply it once more. Yeah. This is the kind of very small candle this GBP INR is making. Such small candles like these, they are very vulnerable to move to any kind of any side. Matlab direction is not clear. And so GBP INR भी मैं prefer करूंगा else to remain outside. डॉलर येन आई एम पॉजिटिव, इसमें कुछ नए बात नहीं है। आई हैव बीन डिस्कसिंग डॉलर येन, आई एम बुलिश, आई रिमेन सम पोजीशन and that is the reason this has given a solid break. It is sustaining above this level. फिर से आज 150 के ऊपर जा रहा है और ये इंटरेस्ट रेट का राइज भले यूरो और जीबीपी को इन्फ्लुएंस करे ना करे, दिस इज वेरी पॉजिटिव फॉर द डॉलर येन पेयर. So dollar yen pair is going up. So as long as it remains floated above 149.5, I think it has further opportunity. Today आज का कैंडल मुझे बोल रहा है further quantity add कर सकते हैं, but I will prefer to wait more 150.5 के ऊपर जब क्रॉस करेगा, then I will be thinking about adding further quantity. बट इट्स लुकिंग मोर पॉजिटिव। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे जेपीवाई आईएनआर को, एंड डॉलर येन पॉजिटिव मतलब जेपीवाई आईएनआर नेगेटिव। जेपीवाई आईएनआर ब्रेकिंग लोअर, हम लोग का एक फ्रेश अनदर एंट्री। मैं थोड़ा पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लिया था। एक इंटरेस्टिंग बात कि कैंडल का साइज छोटा हो गया, विच मीन्स बियर्स हैव ओवरऑल लॉस्ट सम स्ट्रेंथ, बट बाई का भी विन प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो। सो बाइंग का टेंशन तो है नहीं, जो हो सकता है दैट इज कंसोलिडेशन। सो इट विल रिमेन सम क्वांटिटी शॉर्ट। मैं इसमें शॉर्ट रहना पसंद करूंगा, एंड मेन इस लेवल का ब्रेक हो जाए कन्विंसिंग, देन वी विल कंटिन्यू टू ऐड मोर एंड मोर क्वांटिटी एग्रेसिवली विद द रेनबो का जो पिरामिडिंग रूल है। अब हम लोग जा रहे हैं यूएसडी आईएनआर पेयर में। आई डोंट लाइक दिस पेयर मच। दिस इज पेयर मच इन द सेंस फॉर डायरेक्शनल ट्रेडिंग। ये एक आरबीआई मैनेज्ड पेयर है विथ वेरी लो वोलेटिलिटी। आप एक रेगुलर पैसा एलोकेट कर सकते हैं कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी की मैं ऑप्शन छोट सेल करता रहूंगा एंड विल गेन सम, दैट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी ओके। सॉरी, बट ये बढ़िया काउंटर नहीं है कि डू डायरेक्शनल ट्रेडिंग। बट आई यूज दिस वन टू क्रिएट सिंथेटिक पेयर। फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी बनाने के लिए इसका जरूरत पड़ा, यूरो लॉन्ग और यूएसडी आईएनआर शॉर्ट। इसके साथ जो पेयर और दो पेयर में मैं इंटरेस्टेड हूं, मतलब ऑलरेडी ट्रेड कर रहा हूं, दैट इज द पाउंड येन एंड द यूरो येन। इसमें मुझे और ऐड करने का ख्याल है। मुझे 190 लेवल का अलर्ट था, इट हैज ब्रोकन अबव द 190 लेवल हियर। So pound as it sustains above 190, it can go higher. ये हाई आने का चांस हो सकता है कि येन का वीकनेस के वजह से आए, बट सिंस पाउंड येन मैं इस बारे में लॉन्ग किया हूं, आई विल फोकस ऑन पाउंड येन चार्ट, नॉट ऑन इंडिविजुअल येन और जीबीपी। इंडिविजुअल येन के लिए मैं इंडिविजुअल येन का चार्ट देखूंगा और पाउंड येन के लिए मैं पाउंड येन का चार्ट देखूंगा। पाउंड येन भी आप जीरोधा में क्रिएट कर सकते हैं। 10 पेयर ओवरऑल हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। दिस इज पाउंड येन। पाउंड येन इज ब्रेकिंग हायर, इसमें मैं और क्वांटिटी ऐड करूंगा। आई एम बुलिश ऑन दिस वन, यू नो व्हाई, बट नॉट सिग्निफिकेंटली, क्योंकि फंडामेंटल साथ नहीं है। एज जब फंडामेंटल, सेंटिमेंट और टेक्निकल तीनों साथ होता है, देन आई डू द हाईएस्ट ऑफ द क्वांटिटी। उस हिसाब से मेरा ट्रेडिंग प्लान बनाया हुआ है। सो यूरो येन देखिए, इट्स मैं बहुत टाइम से लॉन्ग हूं 160 का ब्रेक से, एंड आई विल कंटिन्यू विद माय लॉन्ग पोजीशन।
And as per Rainbow ka pyramiding rule, it is asking me to add more quantity, and I'll continue to add more quantity with a very important alert level at the min stop 161.99. इस level आया तो I'll consider exiting some part of the trade, but very likely मुझे ये पसंद हो रहा है and ये इसका मैं expect कर रहा हूँ कि this trade will reach 163.9 level, and उसके बाद at least उस और थोड़ा 163.4 लेवल मैं रेड कैप्स के साथ एग्जिट करना पसंद करूंगा, बट अचानक से सेल ऑफ आ गया कोई तो 161.9 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा। देन लास्ट जो हम लोग देखेंगे इन दिस वन इज द इंटरनेशनल गोल्ड XAU USD और द स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट CFD कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। It's a mixed market. I don't do anything, and I don't think I'm very bullish right now. Unless this level breaks, I think it has possibility to drop further as a correction, okay? Or it can go for simple consolidation. So either way it can go. I'll prefer to stay out of this one. What I highlighted rather is thoda position I can hold on the silver, but it's once again a mixed market. Just base building चल रहा है, breakout may come later, बाद में breakout आ सकता है, अभी it's still not ready, but we can spend some quantity which is very minuscule to keep a visceral check जे खुद अपने पैसों से फील करना, शैडो बॉक्सिंग करके, शैडो मार्केटिंग करके, शैडो ट्रेडिंग करके रियल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो इसीलिए छोटा क्वांटिटीज जो हमें पेन नहीं देगा बट हमें विसरली फील कराएगा मार्केट को, उसके जरिए वी कैन रिमेन लॉन्ग। ओवरऑल 125 मिनट्स रेडी नहीं है। आई थिंक इट्स ओके इफ यू, अगर आप बुलिश नहीं हुए, इट्स बेटर टू वेट एंड लेट्स सी द ब्रेकआउट ऑफ 23.3 एरिया का ब्रेक, क्रॉसिंग अप, अलर्ट डाल दिया एंड दैट्स इट। तो ये हुआ करेंसी और प्रेशियस मार्केट का समाचार का पार्ट, एंड नाउ वी विल गो टू कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में व्हाट आई एम थिंकिंग, एक्सचेंज यूएसडी इमीडिएटली अलर्ट आ गया, दैट्स स्ट्रेंज। मैंने ओके मैं गलत जगह पे डाला हूं 22.92। I'll check it. It's anyway not an important alert right now for me. Copper 1. So copper में ये जो बेस मेटल्स है, ये इसमें 125 मिनट्स में प्रेफर करता हूँ या 120 मिनट्स, 2 घंटे का चार्ट, वॉच विच एवर यू लाइक। सो ये जो कल हम लोग ब्रेकआउट देखे थे उसके बाद एक एग्जिट आया था विद द रेड कैप्स। नाउ द बैकग्राउंड इज येलो। आई प्रेफर टू स्टे अवे। मार्केट थोड़ा स्क्वीज हो रहा है, मोमेंटम अपने साथ नहीं है, शॉर्ट टर्म मोमेंटम बेयरिश विच इज कैन बी यूज्ड एज एन एग्जिट। इसका अलर्ट भी अवेलेबल है। अब इस जगह पे अलर्ट डाल दीजिए क्रॉसिंग अप, और इस जगह पे अलर्ट डाल दीजिए क्रॉसिंग डाउन। ये टाइम फ्रेम में इसके अंदर मैं एटलीस्ट खेलना पसंद नहीं करूंगा। सो लेट दिस रेंज ब्रेक डाउन। ये जो 7-8 पॉइंट है, आई डोंट प्ले दिस काइंड ऑफ मूव। आई प्रेफर टू प्ले दिस काइंड ऑफ मूव जहां से 731 विल ड्रॉप टू 701। 7-8 नहीं, 25-30 पॉइंट का मूव। तो ये टाइट रेंज है, इसके लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं, बट अभी कोई सिग्नल नहीं। एटलीस्ट एक रेड फुल कैंडल आ जाए, समथिंग हो, सो इसमें ट्रेड करने के लिए ये 2 अलर्ट लेवल और एक मैं लगा दूंगा, दैट इज द प्राइस एक्शन बियरिश फॉर सेलिंग सोचने के लिए, और फिर से बाइंग सोचने के लिए शॉर्ट ट्रेंड बुलिश। सारा मेरा काम अलर्ट बेस्ड है। सो अलर्ट जब आता है मैं क्लोजिंग के नियर तक वेट करूंगा टू सी द अलर्ट इज वैलिड और नॉट, एंड देन आई विल ट्रेड। और कब वेट नहीं करूंगा, दैट इज आई हैव मोर देन 13+ years ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा। और ये जो लेवल पे कॉपर का स्ट्रगल चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है रेनबो में, जिसको माउंटेन टॉप बोला जाता है। एग्जैक्टली माउंटेन टॉप पे रुका है। तो ये इस काइंड ऑफ मतलब फॉल इज वेरी नेचुरल।
मतलब बुल ट्रेंड वेरी लाइकली खत्म नहीं हुआ. बेस्ट एंट्री वुड बी अबव दिस. 730 का ब्रेक हुआ, वी मे सी वेरी लाइकली फर्दर राइज. तो यहां पे भी एक अलर्ट डालिए 730.15 के ऊपर. ओरिजिनल कैंडल को हमेशा हाइड कीजिए, ये राइट तरीका है. डोंट यूज द ओरिजिनल कैंडल एंड द रेनबो कैंडल टुगेदर. फिर आ रहे हैं हम लोग जिंक में. जिंक में कल हम लोग अलर्ट डाल दिए थे कि फिर से एंट्री का. इट डिड नॉट वर्क आउट. वेरी स्मॉल कैंडल. जिंक इज नॉट वर्किंग. का चाइना का वीकनेस लग रहा है, अभी भी भारी पड़ रहा है. मेजॉरिटी ऑफ द मोमेंटम साथ नहीं है. वी विल स्टे अवे फ्रॉम जिंक. दिस हैज मूव टू ए मिक्स मार्केट. अच्छा थोड़ा राइड दिया है. वी डिड नॉट बाय दिस जोन क्योंकि ये डबल कॉन्ट्रा. बेस्ट वॉज टू बाय हियर. उससे कुछ राइड मिला जहां तक थोड़ा बहुत. उसके बाद एग्जिट एंड नो फर्दर एंट्री. कॉपर में फर्दर ब्रेकआउट आया था. फाइनल एक, दैट इज द लास्ट टच, माउंटेन टॉप, देन कम डाउन. एल्यूमिनियम इज नाउ एज अदर मेटल्स आर करेक्टिंग. एल्यूमिनियम काफी वीक था. एल्यूमिनियम इज अ काउंटर जिसमें अपॉर्चुनिटी है. After full green, a full red candle with a sell signal, this is could be an opportunity. ये इस कैंडल को मुझे क्लोजिंग होने देना पड़ेगा 11:05 पे, और उसके बाद आई कैन कंसिडर, और 11 बजे के आसपास, जस्ट बिफोर द कैंडल क्लोज, 15-20 मिनट पहले. एंड लेट्स लुक एट द डेली चार्ट. एंड डेली चार्ट में इट हैज ब्रोकन एन इंपॉर्टेंट लेवल. That's why I'm more interested in aluminium. It's also a red candle. ये जो trade आ रहा है, it's not a double candle, it's actually double pro. In upper time frame, selling is with the trend, main trend, and in this time frame also, selling is with the main trend. Double pro trade या pro trend trade बोल सकते हैं. तो इसमें इंटरेस्टिंग लग रहा है. दिस कुड बी अ स्टॉप लॉस 198. तो और इस कैन मूव फर्दर अगर हम लोग सक्सेसफुल हुए एंड इसका ब्रेक डाउन हुआ, लॉट ऑफ मूव. तो हरी करने का आई डोंट सी एनी रीजन. आई विल सी हाउ द कैंडल एंडिंग, हाउ द कैंडल इज एंडिंग, उसके ऊपर आई विल पे अटेंशन टू. सो एल्यूमिनियम में अपॉर्चुनिटी आ सकता है. अदर देन दैट नो. जिंक और कॉपर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. सिल्वर और गोल्ड हम लोग देख चुके हैं. नाउ वी विल गो टू एनर्जी सेगमेंट, दैट इज क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस. क्रूड ऑयल में मैं बुलिश रहा ओवरऑल. थोड़ा मार्जिनल बुलिशनेस आई विल कंटिन्यू. Overall candle is now fully green, or interestingly the candle is not only sustaining above the long trend line. ये जो लेवल है अब 73.8, this has become a support, and ये जो लेवल है 75.7, this has become a strong support. We can see a break of, once this level break, we'll see some strong move and could reach 83 area, the US crude oil. So I am positive on the crude oil front. Still, so थोड़ा क्वांटिटी से I'll continue to hold जैसा मैंने बोला है. और ये कैंडल में एंट्री करने के लिए आई नीड अ क्लोजिंग. सो आई विल वेट टिल द नाइट टाइम, सी हाउ इट गोज, फ्रेश एंट्री करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल एग्जिट आ चुका है. और अभी करंटली जो अलर्ट लेवल मैं डालूंगा, दैट इज ऑन द मिन स्टॉप 77 के आसपास की क्रॉसिंग डाउन. दैट विल बी अ कंसर्न. व्हाई इट इज क्रॉसिंग डाउन बिलो the min stop. Currently we will not breach the maximum stop loss, but this crude oil has potential क्योंकि मैं I'm also looking at the forward curve. Forward curve को भी देख रहे हैं, and forward curve अभी भी still towards the bullish की तरफ है. forward curve और ऊपर जा चुका है. हमारा जो trade है that we did on the calendar spread, that has moved further on to the profit. I hope आप लोगों को मजा आ रहा है ट्रेड करके. Calendar spread here was relatively low risk trade.
compared to this open future. So crude oil is clear. I will remain positive, and gradually, as per rainbow rule, I will continue to build. मेरा क्रूड का फंडामेंटल कंसर्न दो है. One is crude supply is still quite enough robust. This is number one. Second is China weakness is another that is a negative factor for crude oil. And finally, the recessionary cycle, crude oil goes with the GDP, with the market, with the economic cycle. So these three are my fundamental concern for the crude oil on the downside. But abhi on the timing tool, it's bullish. And so I'll remain bullish with some positions. Thank you. Regarding crude oil. So now last counter जो हम लोग देखेंगे, that is the natural gas. पहले हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल चार्ट को. दिस इज द डेली चार्ट ऑफ नाइमेक्स नेचुरल गैस. डेली चार्ट में करेक्शन. आवर रेनबो सेटअप caught the correction wonderfully. Awesome catch it was. This was the move after exit करेक्शन. यहाँ पे हम लोग बाई नहीं करेंगे. फर्स्ट बाइंग चांस वाज द ब्रेक ऑफ 1.71. वहां पे जो भी बाई किए हैं उसका पार्शियल एग्जिट आ चुका है. तो नेचुरल गैस में फ्रेश एंट्री के लिए डू प्राइस एक्शन, बुलिश अलर्ट. और जब अलर्ट आएगा आप चाहेंगे शॉर्ट टर्म मोमेंटम आपके साथ हो. And if it's there till the closing or near closing, you can enter natural gas on the buy side. But natural gas ka ye buy is pro trend, but on the upper time frame, any kind of buying is against the main trend, so it's a contra. So one pro, one contra trend. So ये आप अपना रिस्क एक्सपोजर मैनेजमेंट में जरूर एनकाउंटर कीजिएगा. तो ये रहा इंटरनेशनल रिपोर्ट. अब हम लोग देखेंगे इंडियन सिनारियो विद क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस. डेली चार्ट, अ कमबैक स्टोरी. इसके साथ मैं देखना प्रेफर करूंगा कि ये मीटर को आई हैव चेंज द सेटअप नाउ टू कमोडिटीज, जो पहले शायद करना चाहिए था, बट ओवरऑल मदर सेटअप में कोई चेंज नहीं होता. बट एडिशनल मीटर इज अवेलेबल. राइजिंग मूड में मुझे मिल रहा है WTI क्रूड ऑयल. नेचुरल गैस इज ऑल्सो ऑन द राइजिंग मोड. कॉपर जिंक rising, but we have seen it's not ready. So natural gas and WTI crude oil, I will prefer to remain. Aluminium is falling, जो हम लोग सेल के साइड अपॉर्चुनिटी देखे हैं एल्यूमिनियम में. And gold silver will prefer to stay neutral unless we see further ground. So crude oil to enter I will fresh quantity. अगर डेली के हिसाब से I'll wait to see. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे सस्टेनेंस हो रहा है. ये व्हाइट क्रॉस कर चुका है ये ऑप्शन लाइन 2. दिस इज अनदर साइन कि ये ब्रेकआउट क्वाइट सॉलिड है. सो क्रूड ऑयल में कैन सी ग्रेजुअल मूव अप. ये रहे रेजिस्टेंस 6652, 6477. उससे स्ट्रॉन्ग है, वे स्ट्रॉन्ग 664045 इसके आसपास. नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग है 666996 और सबसे स्ट्रॉन्ग माउंटेन टॉप 7115. सो ऐसे करके रेजिस्टेंस के थ्रू आई थिंक क्रूड ऑयल इज गोइंग टू गो विद द ग्रेजुअल राइज. चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से लग रहा है. नेक्स्ट लास्ट काउंटर जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज द नेचुरल गैस. नेचुरल गैस में 125 मिनट में एग्जिट वाज ऑसम. आई होप जो रेनबो इस्तेमाल कर रहे हैं वो देख रहे हैं उसका फायदा कि इतना ब्यूटीफुल ऑसम एग्जिट आया है. This natural gas in India is still not ready for a buy in 125 minutes because it is against the main trend. In upper time frame, it is against the main trend. In our execution time frame, matlab double contra. Double contras are risky, so I'll prefer to buy once that move towards above the option line 2 or the long trend line.
इसके ऊपर जाने से then only I'll prefer to go long in natural gas. But this was a beautiful, awesome exit from the short trade. Nicely done. तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. अगर आप लास्ट तक वेट कर रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड हैप्पी ट्रेडिंग.